हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 1 जुलाई 2023। टुडे द फोकस ऑफ आवर डिस्कशन विल बी आर्टिकल 164 read in conjunction with article 163 about the issue which has emerged in Tamil Nadu. That will be the main issue which we are going to discuss. After that we will be discussing about the India-Africa relation and African Union. As you know that recently our Prime Minister Narendra Modi has written to his G20 counterparts for the admission of African Union in G20. So we will see the areas of cooperation between India and Africa and the African Union. So let's start with the news. Now the first news, as you can see over here, is that after high drama, Biren drops his resignation plan. So this is the news, which is the part of the larger news which we are doing from the past 2 months. That is Manipur violence. So over here now, and Biren Singh, who is the Chief Minister of Manipur, who has dropped his resignation plan. So women they had gathered outside his residence and teared up his resignation letter. So now the BJP is saying that CM has decided against quitting to honor the sentiments of the people. Now let's come to the next news. That is Twitter plea on center's block orders dismissed. So ये news है from the High Court of Karnataka which has dismissed a petition which was filed by Twitter. तो ट्विटर ने एक petition फाइल किया था जहां पे उन्होंने जो several blocking orders थे which was issued by the Union Ministry of Electronics and Information Technology, वो फाइल हुआ था. तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने petition dismiss किया on the ground that it is devoid of merit. At the same time, it has also fined the company that is rupees 50 lakh. The reason is that the Twitter has approached the High Court without complying with the central government's order. So ये जो 50 lakh जो पे करना है, it will be paid within 45 days to the Karnataka State Legal Services Authority. Then the next news is that again from Tamil Nadu, that is Stalins disregards letters, asserts governor has no power to sack a minister. So let's take a brief background of this news, and after that we will go to the editorial to understand this news in the quite detail. So Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin. तो पहली बात पे जो फैक्चुअल न्यूज आ रहे हैं पहले उनको आप लिखते चले जाइए. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin wrote to गवर्नर R.N. Ravi. तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. Ravi. So जो लेटर है it is that unconstitutional communication dismissing arrested minister V. Senthil Balaji without my advice is void ab initio on honest in law and has been disregarded. तो जो लेटर है ये मेरे बिना एडवाइस के हुआ है. This all flows from Article 164. Now let's take one news that is tight security greets pilgrims in Kashmir for Amarnath यात्रा. तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ दिन पहले चार धाम यात्रा किया था. अगर आप लोग को याद हो चार धाम यात्रा, तो नॉर्मली एक ये कंफ्यूजन होती है कि चार धाम यात्रा में अमरनाथ यात्रा आता है कि नहीं आता. तो वो नहीं आता है क्योंकि चार धाम यात्रा में जो चारों हमारे श्राइन्स हैं या जो चारों होली प्लेसेस है दे ऑल आर इन उत्तराखंड इंक्लूडिंग हेमकुंड साहिब which are like केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड हेमकुंड साहिब. अमरनाथ यात्रा में जो ये अमरनाथ श्राइन है इट कम्स इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. इट कम्स इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद अगर आप देखेंगे देयर आर वेरियस रूट्स टू रीच अमरनाथ. वन इज सोनमार्ग. यू कैन गो थ्रू सोनमार्ग और यू कैन गो टू पहलगाम. उसके बाद अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन है कि अमरनाथ श्राइन जो है वो कौन सी वैली में लोकेटेड है, तो अगर ये फैक्चुअल क्वेश्चन कभी आ जाए तो JNK वैली कह सकते हैं. वो JNK में सिंध वैली. There is one valley which is called as Sindh Valley. So Amarnath Shrine is located there. It is one of the Shakti peaks. Now the next is youth looking beyond jobs and are filing patents, founding startups, says our Prime Minister. So over here now इसमें जो है बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है बट एक दो चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. पहला तो ये that there are now 45 Indian universities in the quadricolor Simon World University ranking, and which is a sharp growth from just 12 in 2014. So currently there are 45 Indian universities in the QS World University ranking. Okay, that is very important thing. The second is अब यहाँ पे आते हैं फाउंडिंग स्टार्टअप्स एंड PM. सो स्टार्टअप्स के लिए ठीक है, तो एक नीति आयोग का मिशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, जो एग्जाम में काफी आता है. दैट इज अटल इनोवेशन मिशन. दिस अटल इनोवेशन मिशन इट इज लाइक अ इंक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप्स.
Okay. Now let's discuss the editorial that is about Tamil Nadu, which we were discussing. So there are two editorials which have appeared today. So I will try to cover both of them in the single discussion. That is, the governor's move is dangerous and unconstitutional. ओके सो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि पहले तो पूरा जो इवेंट हुआ वो एक्सप्लेन ही हुआ है उसके बाद आर्टिकल 164 देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे बोथ हैव बीन डिस्कस्ड एंड कंपेयर्ड एंड देन द पोजीशन ऑफ गवर्नर according to our constitution, and then there is a Supreme Court judgment related to it which clarifies the position of governor vis-a-vis chief ministers and other ministers. So this is the whole structure of this editorial. So let's discuss this editorial. So now let's get understand that what exactly what has happened. तो यहाँ पे पहली बात ये हुआ कि जो गवर्नर है तमिलनाडु के RN रवि he has dismissed V Senthil Balaji. अब ये V Senthil Balaji कौन है? He is the former electricity minister in Tamil Nadu and he was arrested by enforcement directorate in money laundering cases. So now he was dismissed by Tamil Nadu governor RN Ravi without consulting the chief minister. तो June 29, 2023 को इन्होंने एक कम्युनिकेशन इशू किया. ठीक उसके बाद उन्होंने इस कम्युनिकेशन को वापस लिया ये बोल के कि दैट नाउ ही विल बी कंसल्टिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. सो इफ यू विल सी दैट over here CVV Senthil Balaji okay in the council of ministers will adversely impact the due process of law. ये जो रीजन उन्होंने दिया है including fair investigation that may eventually lead to breakdown of the constitutional ministry in the state, hence the dismissal of the minister. So this is the reason which has been provided by the governor that if he remains the minister, okay, so the fair investigation may be jeopardized. अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे ये जो इन्होंने एक्शन लिया इट वाज विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. Right? So now the author says कि now this is a very dangerous precedent and it has the potential to destabilize state governments, putting the federal system in jeopardy. So he says that if governors they are allowed to dismiss the individual ministers without consulting the chief minister because these ministers they are appointed on the recommendation of chief minister, so this the whole communication system will collapse. अब अपने पोजीशन को सब्सटेंशिएट करने के लिए नाउ ऑथर cite some important articles from Constitution and Government of India Act 1935. So जो हमारा जो operative part है, that is the political part of our constitution, it has been greatly been influenced by the Government of India Act 1935. So let's take Article 164. What does it says? So if you will see the Article 164, तो यहाँ पे है कि the chief minister is appointed by the governor without any advice from anyone. But the appointments of individual ministers is done only and on the advice of chief minister. So अब ऑथर कहता है कि इस आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि दैट गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन. सो लॉजिकली अभी ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है. सो लॉजिकली द गवर्नर कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. So now he says the reason why I'm saying this is very simple. That is the chief minister has the discretion to choose his ministers. तो ये क्योंकि एक parliamentary form of government है. तो यहाँ पे जो chief minister है, he is the political executive, so he is responsible to the people. So he should have the discretion to choose his ministers for his council. Then again, if you will see that the constitution has not transferred the discretion of the chief minister to the governor. Now, let's see some of the articles of Government of India Act 1935. So, Government of India Act 1935 में there is one section 51(1) of the act which says, अब ये देखो ब्रिटिश टाइम में देखो किस तरीके से था कि गवर्नर को एब्सोल्यूट पावर था फॉर द अपॉइंटमेंट एंड dismissal of individual ministers. So the governors, okay, ministers shall be chosen and summoned by him, shall be sworn as members of the council, and shall hold office during his pleasure. So if you will see that this section makes clear that the minister shall be chosen by the governor, not by the chief minister. Second, that they hold office during the pleasure of the governor. उसके बाद जब हम सब section 5 पढ़ते हैं section 51 का, it says that the functions of the governor under this section with respect to the choosing and summoning and dismissal of ministers and with respect to determination of their salary shall be exercised by him in his discretion. So governor has the, if you can see, unfettered power in the appointment of ministers and removal. Fine.
So you will see that one is the ministers, they are chosen by the governor, they are dismissed by him at his discretion. This is Government of India Act 1935. But now we have adopted a parliamentary form of government, a representative form of government. So when we read Article 164 and then Article 163, okay. So if you will see the Article 164 में एक term है, that is the minister shall hold office during the pleasure of the governor. Fine. तो इसका मतलब कि does this give the power to the governor to dismiss ministers? So if you will see, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, देन यह गवर्नर जो है इट इज नियर अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड ही एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. दैट इज आर्टिकल 163. नाउ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने विदाउट एनी डाउट बात कही थी कि देयर इज नो एग्जीक्यूटिव फंक्शन व्हिच अ गवर्नर कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. So choosing a minister and dismissing him are no longer within his discretion. It is the chief minister who chooses the minister. It is the chief minister who recommends the removal of a minister. उसके बाद then what about the pleasure doctrine? ये अब आर्टिकल 164 में ये भी लिखा है that ministers they hold office during the pleasure of the president. Now the author says that this word simply refers to a formal act of issuing the order of dismissal, because it is ultimately governor who appoints the ministers on the advice of chief minister. So it should be governor only, okay, who can pass the order, final order for the dismissal of the minister. So the author says the pleasure of the governor under the Constitution of India in so far as it relates to minister is not the same as that of the colonial governor. And if you will see कि जो हमारा आर्टिकल 164 है, the word, some of the words which are omitted are chosen, dismissal, discretion, these were omitted. Now coming to the some important Supreme Court judgments. Now let's see the first case, that is Shamsher Singh and another versus State of Punjab. तो यहाँ पे जो 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उन्होंने डिक्लेयर किया the law on the powers of governor in the republic in the following words, that we declare the law of this branch of our constitution to be that the president and governor, custodians of all executive and other powers under various acts, shall, by virtue of these provisions, exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of the ministers, save in few well-known exceptional situations. Okay? Then there is next case, Nabam Rabia versus Deputy Speaker, by the Constitution Bench of 5 judges. They have reaffirmed the law which was laid down in Shamsher Singh and other, and they have held that the discretionary power of the governor are limited to the postulate of Article 163(1). मतलब that is aid and advice of Council of Ministers. The next is a new chapter in India Africa ties can be written. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, फाइन, so if you will see that Africa currently it accounts for 17% of world's population and which will reach 25% in 2050. Okay? अगर हम past 15 years की बात करें, especially since 2014 when India Africa Summit was held, so India Africa relations they have developed steadily, but there is more progress to be achievable. जो हमने इजिप्ट के केस में भी पढ़ा था. तो एक रिपोर्ट है that is India Africa Partnership Achievements, Challenges and Roadmap 2023. This is the report which has been prepared by Vivekanand International Foundation. So now this report it examines the transition that is happening in Africa, be it in demography, that is population, economy, political and social. So the report says that Africa it is slowly heading towards regional integration and it is devoted to democracy, peace and progress. There are only few exceptions to this, that is Ethiopia, Sudan and Central African Republic. These countries they are battling insurgency, ethnic violence and terrorism. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं who are investing or who are deepening their economic cooperation with the African countries. So if you will see that some of these countries are at the front runner is China, Russia, then United States, European Union, Japan, Turkey and United Arab Emirates. उसके बाद हम चाइना की देखें तो चाइना they have a robust policy since 2000 and now if you will see that China जो है
It has the important role in Africa as the infrastructure developer, resource provider, and the financer. And then since 2000, it has invested enormously in Africa in terms of money, materials, and diplomatic push. उसके बाद अगर आप level of engagement देखेंगे चाइना अफ्रीका का तो it is very high. Since 2007, Chinese leaders they have visited the continent 123 times and 251 African leaders have visited China. उसके बाद आप देखें that India it has a substantive काफी अच्छी partnership है अफ्रीका के साथ and there is a lot of goodwill, but there is need to reorient our Africa policy to deepen the engagement. तो अब हम यहाँ पे अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो रोड मैप 2030 which is a set of 60 policy recommendations that are designed to deepen and diversify the India Africa partnership. तो पहला क्या है वन बाय वन देते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. देन पीरियोडिक समिट्स होनी चाहिए इंडिया अफ्रीका का जो लास्ट समिट हुआ था वो 2014 में हुआ था. उसके साथ साथ देयर शुड बी अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग एवरी ईयर to be held between the chairperson of the African Union and India's External Affairs Minister. Then African Union entry into the G20. So our Prime Minister has already requested the G20 counterparts to consider this proposal. Then the next is the expert group has to be formed. Okay, at this and the at the secretary level for managing the African affairs. The second is defense and security cooperation. So here there should be defense attaches which should be deployed in Africa, then expanding the dialogue on defense issues, then maritime collaboration, then line of credit to facilitate defense exports. Then there can be range of issues where there can be cooperation between the two countries that two India and Africa, that is counter-terrorism, cyber security, and emerging technologies. The third is economics. So India-Africa trade is touching $98 billion in financial year 22-23. Okay. So this figure can go up if access to finance through creation of an Africa Growth Fund is ensured. So here the author is suggesting that there should be an Africa Growth Fund to give momentum to trade. Then there should be a special focus on promoting trilateral cooperation and deepening science and technology cooperation, which can pay the rich dividends. Coming to the fourth, socio-cultural cooperation should be increased through greater interaction between universities, think tanks, civil society, and media organizations in India and some of the African countries. So some of the steps which have been already suggested by the author is National Center for African Studies. It will be the right step. Then Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC). Then Indian Council for Cultural Relations Scholarship for African students. Okay, these are some of the steps which can be taken for socio-cultural links or increasing people-to-people contact. The next is visa measures for African students who come to India for higher education should be liberalized. उसके बाद the report is suggest a special mechanism for implementing the roadmap 2030. So ये special mechanism क्या है? That is collaboration between Ministry of External Affairs and National Security Council Secretariat through a team of officials working under the joint leadership of Secretary Africa in Ministry of External Affairs, and there should be a designated Deputy National Security Advisor. The next is in talk with Putin, Modi calls for dialogue and diplomacy to end war in Ukraine. तो यहाँ पे इस आर्टिकल में जो है we are going to see about SCO and G20 and BRICS. तो ये तीनों के समिट्स लाइंड अप हैं, तीनों का इंडिया मेंबर है और SCO और G20 को इंडिया जो है इस साल अपनी लीडरशिप भी दे रहा है. So after returning from USA and Egypt, so our Prime Minister has talked with Vladimir Putin. Okay, so यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें फोकस करना है that is Shanghai Cooperation Organization. So the head of the state summits of Shanghai Cooperation Organization will take place on July 4. Then BRICS will take in August and G20 summit will take in September. Okay. उसके बाद Pakistan and China they are going to be present at the SCO meet virtually. Then there will be leaders of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. And you will see that Iran will be the new member
in SCO this year. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो one of the Central Asian country which is not a member of Shanghai Cooperation Organization is Turkmenistan. The next is South China Sea. तो यहाँ पे दो कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, एक है चाइना, एक है फिलीपींस। चाइना का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? चाइना जो है वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है साउथ चाइना सी में, कहाँ तक? 9 लाइन तक। इसको डिस्प्यूट कौन करता है? फिलीपींस। क्यों करता है? क्योंकि चाइना जो 9 लाइन तक जो अपना कंट्रोल रखना चाहता है, दैट इज बिकॉज दैट चाइना हैज क्रिएटेड वेरी आर्टिफिशियल आइलैंड्स ओवर देयर। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि देयर वाज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक रूलिंग आई थी जो जुलाई 12 2016, एंड दैट रूलिंग वाज इन द फेवर ऑफ फिलीपींस, बट दैट वाज रिजेक्टेड बाय चाइना। ठीक है, तो दैट वाज ये जो रूलिंग आई थी दैट वाज अडेरेंस टू वन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन व्हिच इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982। तो ये जो लॉ है ये बताता है कि कौन से मैरीटाइम राइट्स किस कंट्रीज की किस तरीके से होंगी। जैसे कि अगर आप बात करें तो उनक्लोज में ही वो चीज डिफाइंड है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल लिमिट होगा वाटर में, अगला 12 नॉटिकल माइल्स आपका कॉन्टिग्यूअस जोन होगा, और 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। ठीक है, सो अंडर उनक्लोज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इट रूल्ड इन द फेवर ऑफ फिलीपींस व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय चाइना. Now what is happening over here is that China and ASEAN they are coming up with the code of conduct for South China Sea. ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एशियान में ही बहुत सारे इश्यूज को लेके अभी एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ठीक है, बट इंडिया ओवर हियर इट सपोर्ट्स कि जो भी बनेगा कोड साउथ चाइना सी के लिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड इन 2016. Now next let's discuss Uniform Civil Code UCC Article 44. तो यहाँ पे हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं. So now the Uniform Civil Code in Uttarakhand talks about gender equality, elimination of arbitrariness and discrimination. Okay, and then uniform laws on property rights, then adoption rules. These are some of the important ingredients of Uniform Civil Code for Uttarakhand. Okay, now ये जो पूरा ये हेड कर रही हैं that is being headed by retired Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai. So she is heading the UCC committee which was formed by the Uttarakhand state government. Now the next news is Center invites ideas from public to curb tomato prices, and the next news is after stock limits India to import 12 lakh tons of tur dal to keep prices in check. अब इस न्यूज को आप अगले पेज पे जो न्यूज पढ़ेंगे उससे कंपेयर कीजिए कि एल नीनो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उसके बाद भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जुलाई में नॉर्मल रेनफॉल की बात बोली है. ठीक, बट जून में जो फिगर आए हैं रेनफॉल के वो थोड़े डेफिशिट के आए हैं, स्पेशली इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया. अब देखिए अनसीजनल रेन जब भी होगा, ठीक है, तो क्रॉप्स जो हैं वो बेकार हो जाते हैं और उनकी जो प्राइसेस है मार्केट में वो बढ़ जाते हैं. तो जो पहले प्याज का किस्सा था अब वो टमाटर का किस्सा हो गया है. ठीक, पहले प्याज का दाम बढ़ा, अब टमाटर का दाम बढ़ गया है. तो अब यहाँ पे सेंटर ने जो क्या है एक अनाउंस किया है टोमेटो ग्रैंड चैलेंज. मतलब यहाँ पे पब्लिक से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो इनोवेटिव आइडियाज दें कि किस प्रकार से हम टमाटो प्राइसेस को रिड्यूस कर सकते हैं अपने मार्केट में. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आइडिया ये है कि इस तरीके का हम टेक्निक्स लगाएं कि जो अवेलेबिलिटी हो टोमेटो का वो भी पूरा हो जाए, फार्मर्स को जो प्राइस मिलना चाहिए वो भी उसको मिल जाए, दैट इज फेयर रिम्यूनरेशन टू फार्मर्स. अब देखिए ये जो क्रॉप्स हैं इनके शॉक्स कैसे लगते हैं, प्राइस शॉक्स क्यों आता है. फाइन, so it says that the cycle of planting and harvesting seasons and the variation across regions these are primarily responsible for price seasonality in tomato. ठीक है, मतलब जो साइकिल ऑफ प्लांटिंग है, हार्वेस्टिंग सीजन्स है और फिर वेरिएशन है, मतलब कि मान लीजिए कि टोमेटो हर जगह लगा पर जहाँ जहाँ बारिश आई
वहां पे टोमेटो का क्रॉप जो है वो अ, फसल खराब हो गया। ठीक, तो एक ये रीजन है। उसके साथ साथ जो है डिसरप्शंस जो होते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, इसकी वजह से, और उसके बाद क्रॉप डैमेज ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, इट लीड टू सडन प्राइस हाइक इन प्राइसेस। द नेक्स्ट इज इंडिया टू इम्पोर्ट 12 लाख टन्स ऑफ तूर दाल टू कीप प्राइसेस इन चेक। तो दाल का दाम जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 35% बढ़ गया है। अब अगर आप देखें जो तूर है, इट इज गिविंग अस ट्रबल, ये बात बोली जा रही है। ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस जो है तूर का, इट इज अप बाई 25% टू रुपीज 128.66 पर केजी कंपेयर टू लास्ट ईयर्स लेवल। फाइन। अब यहाँ पे जो मेजर रीजन है तूर का वो क्या है? पहला तो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तूर का वही काफी कम है। द नेक्स्ट इज द कंट्रीज तूर प्रोडक्शन रिमेन लो एट 30 लाख टन्स। दैट इज द फर्स्ट रीजन। नाउ अभी तक कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया है तूर? दैट इज 6 लाख टन्स। देन इंपोर्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन फ्रॉम म्यांमार एंड ईस्ट अफ्रीकन countries. The next is the second measure which government has taken is to check the prices of food. The secretary have said the government has taken several measures. सबसे पहले measures क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं जो दाल या किसी भी फूड ग्रेन्स को स्टॉक करते हैं उसकी लिमिट को घटा देना, जो स्टॉक लिमिट जिसको कहते हैं। ओके, उसके ऊपर एक सीलिंग लगाना कि इससे ज्यादा आप स्टॉक जो है वो नहीं रख सकते। दैट इज द फर्स्ट। देन द सेकंड इज टू ऑफलोड 50,000 टन्स फ्रॉम द बफर स्टॉक इन द market. The next is center to issue norms against dark patterns in online advertisement. तो आपने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जहाँ पे अर्जेंसी दिखाते हैं, लिमिटेड सीट। ठीक है, आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे लिमिटेड अवेलेबल और लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल और स्टॉक इज गोइंग टू फिनिश। ओके, तो इन सब चीजों की जो डार्क जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसको हम डार्क पैटर्न बोलते हैं। मतलब एक सेंस ऑफ स्कैरसिटी क्रिएट करेंगे कि अभी खरीद लीजिए वरना इसका दाम 2 गुना बढ़ जाएगा, या अभी इसको सीट को अपने बुक कर लीजिए वरना सीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट नाउ सेंटर इज गोइंग टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट दिस डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज अर्ज्ड कंज्यूमर्स टू फ्लैग सच मैनिपुलेटिव ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई चीज अपने आप ही ऐड हो जाती है। ठीक है ना, कि आप इसके साथ ये भी खरीद रहे हैं। So these all are not a fair trade practices. So now what has happened is that the Union Consumer Affairs Ministry has decided to issue specific guideline to control these dark patterns. Fine. So consumers, if they are facing such things, so they can call 1915 or they can WhatsApp the message to the given number. And now let's see that what these dark patterns are. So see over here, tactics such as false urgency, which creates a sense of scarcity to pressurize customer into making a purchase or taking an action. Then basket sneaking. Then technique to add additional products or services to the shopping cart without user consent. ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ तो उसमें माउस का भी अपने आप आ गया, इस तरीके से। Then subscription traps, that is a tactic that makes it easy for consumer to sign up for a service but very difficult for them to cancel it, and then hiding the additional cost, particularly by travel and tourism website. It all comes under the dark patterns in online advertising. The next is, as El Nino is yet to strengthen, IMD forecast normal rainfall during June. जुलाई। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आफ्टर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन पहले ही बोल दिया था कि ईयर द रेनफॉल विल बी 96% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज, और इसको इन्होंने नॉर्मल कहा था बिकॉज इट इट इज -4%, सो इट लाइज इन द नॉर्मल रेंज। इट सेज दैट इट विल बी नॉर्मल रेन इन जुलाई which is the highest amount of rain during the monsoon month। तो पूरे 4 महीने में जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश होता है। It means it will be within 6% of the 28 centimeter that is usual for the जुलाई मंथ। उसके बाद आप देखेंगे साइक्लोन इफेक्ट। सो दिस ईयर साइक्लोन बिपरजॉय which originated in Arabian Sea, it obstructed the normal onset of monsoon over Kerala and it has contributed to depressed rainfall over the most parts of the country। तो सेंट्रल इंडिया में देखेंगे तो कितना है? It has received 6% less rainfall than what is usual for the region।
in June. And then southern India it is close to 45%. Then over it has witnessed. Now, if you will see, जो मैंने आपको बताया, this last paragraph, it is important. That is, in June, the IMD had said that rainfall in the June-September period was likely to be normal or 96% of the long period average of 87 centimeter. अब हम इकोनॉमी से एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेते हैं. एक तो हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं. That is, Federal Bank appoints former NPCI MD Hota as chairman. तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर एमडी एंड सीईओ हैं, AP Hota, now he has been appointed as the Federal Bank chairman. The next is the May core sector growth pace breaks to 4.3% from 19.3%. So core sector, there are 8 core sector in Indian economy which contributes to about 40.3% in index of industrial production, which is released by National Statistics Office. तो अगर आप देखेंगे ये 8 core sectors में, so you have crude oil, natural gas, coal, petroleum products, then steel, electricity, cement, fertilizer. तो इसमें से जो प्रोडक्शन जिसकी थोड़ी सी कमजोर हुई है वो है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद if you will see the rate of growth in the production of fertilizer, steel and cement, it slowed down to 9.7%, 9.2% and 15.5% respectively. So friends, that's all for today. We will meet next week again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.